Hello, students. I hope you're all fine and safe at home. In our last class, you might remember we introduced the second chapter and we discussed the first topic to that chapter, that is classification of goods. Today, we will move ahead and we will discuss the next two topics, that is concept and components of consumption expenditure and concept and components of investment expenditure. But before that, let us have a quick recap of what we did in the last class. So, here we go. In the last class, we discussed about classification of goods. So, the first point of the summary says that goods can be classified into final goods and intermediate goods. गुड्स को हम दो तरह से क्लासीफाई करते हैं, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स. फाइनल गुड्स आर बॉट बाय हाउस होल्ड्स एंड कंज्यूमर्स फॉर द पर्पस ऑफ फाइनल कंजम्पशन. फाइनल गुड्स को हम कंज्यूमर्स या हाउस होल्ड्स फाइनल कंजम्पशन के लिए जनरली खरीदते हैं. whereas no value addition is required to these goods. Value addition means no further processing, no further packaging, etc. is required. We just have to bring them and we can consume them as it is. Moving further, intermediate goods on the other hand are those goods that are not ready for final consumption. These goods need further processing. फाइनल गुड्स के अलावा एक कैटेगरी और होती है गुड्स की जनरली, विच इज़ नोन एज इंटरमीडिएट गुड्स, एंड दीज गुड्स आर नॉट रेडी फॉर फाइनल कंजम्पशन एंड दीज गुड्स नीड फर्दर प्रोसेसिंग. इन गुड्स को फर्दर प्रोसेसिंग की भी ज़रूरत होती है और ये फाइनल गुड्स की तरह से फाइनल कंजम्पशन के लिए रेडी भी नहीं होते. फाइनल गुड्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू फाइनल कंज्यूमर गुड्स एंड फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स. फाइनल गुड्स को हम फिर से दो पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं. या तो वो गुड्स फाइनल कंज्यूमर गुड्स हो सकते हैं या फिर वो गुड्स फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स हो सकते हैं. फाइनल कंज्यूमर गुड्स में फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज. फाइनल कंज्यूमर गुड्स को अगेन वी क्लासीफाई देम इनटू बेसिकली 4 पार्ट्स और 4 टाइप्स. ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, नॉन ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, सेमी ड्यूरेबल गुड्स होते हैं एंड सर्विसेज होती हैं. दिस explanation to these has already been discussed in the previous module. And final producer goods are purchased by the producer in the process of and used in the process of production of other goods. फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स जो होते हैं वो प्रोड्यूसर के द्वारा खरीदे जाते हैं और उन्हें किन्हीं दूसरे गुड्स की प्रोडक्शन में प्रोड्यूसर के द्वारा यूज़ किया जाता है. So students, this is all what we did in the last class. Now moving with today's discussion, our first topic for today is concept and components of consumption expenditure. So as you all know, consumption is the act of consuming goods and services. Consumption मतलब goods and services को consume करना. Naturally the consumer will be consuming, who all are classified as consumers that we will see in this particular slide. But consumer's purpose basically is to consume and to satisfy his own needs or wants. कंज्यूमर का मेन पर्पस होता है गुड्स को कंज्यूम करना और अपनी नीड्स, अपनी वांट्स को satisfy करना. So let's read what the slide says. In macroeconomics, consumers or consumption expenditure refers to aggregate consumption expenditure in the economy. In an economy, consumers are classified as households, the government, and
the non-profit private institutions like NGOs, temples, mosques, gurdwaras, and others. So in macroeconomics, consumption expenditure refers to aggregate consumption expenditure. Aggregate word we have discussed so many times in the previous sections. Aggregate का मतलब होता है sum total. So अगर वर्ड एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है तो इट मीन्स द सम टोटल ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी. नाउ ये जानना ज़रूरी है कि वो कंजम्पशन करता कौन है. तो एज पर द लाइन्स, एज पर द गिवन लाइन्स, कंज्यूमर्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज हाउसहोल्ड्स, the government and non-profit private institutions like NGOs, temples, gurudwaras and others. हाउसहोल्ड्स अपने कंजम्पशन पर पैसा खर्च करते हैं और अपनी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं. गवर्नमेंट जो है वो कंज्यूमर गुड्स खरीदती है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग डिफरेंट फोर्सेस, फॉर मिड डे मील्स इन गवर्नमेंट स्कूल्स एंड सच अदर पर्पसेस. एंड नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस बाय कंज्यूमर गुड्स फॉर चैरिटी. सो बेसिकली कंजम्पशन जो एक्ट है वो हम इकोनॉमी में ऐसा समझते हैं या ऐसा मानते हैं कि बेसिकली 3 सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी में जो कंजम्पशन करते हैं, विच आर हाउस होल्ड्स कंजम्पशन करते हैं अपनी कंजम्पशन या कंज्यूमर गुड्स का. एज इट इज़ रिटन हेयर, हाउस होल्ड्स बाय द कंज्यूमर गुड्स फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर वांट्स. अपनी ज़रूरतों को सेटिस्फाई करने के लिए हाउस होल्ड्स जो होते हैं वो कंज्यूमर गुड्स खरीदते हैं. गवर्नमेंट बाइज कंज्यूमर गुड्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग डिफेंस फोर्सेस. सो गवर्नमेंट जो होती है वो कंज्यूमर गुड्स को खरीदती है डिफेंस फोर्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए. एंड फॉर मिड डे मील्स इन गवर्नमेंट स्कूल्स एंड सच अदर पर्पसेस. कंज्यूमर गुड्स इसलिए भी खरीदे जाते हैं ताकि गवर्नमेंट स्कूल्स में मिड डे मील्स स्कीम जो है गवर्नमेंट की, उसमें उन गुड्स को, उन वैल्यूएबल्स को, उन ईटेबल्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके और स्कूल के बच्चों को सेटिस्फाई किया जा सके. एंड सच अदर पर्पसेस. Non-profit private institutions buy consumer goods for charity. Non-profit private institutions means the NGOs, the temples, the gurudwaras, all these buy the consumer goods for charity. So, moving ahead, the consumption expenditure is formulated as aggregate consumption expenditure is equal to consumption expenditure by the households plus consumption expenditure by the government and plus consumption expenditure by non-profit private institutions. So अगर हम formulate करते हैं इसको, then aggregate consumption expenditure किन 3 चीज़ों से बनता है या जिन 3 चीज़ों से बनता है वो हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउसहोल्ड्स, यानी हाउसहोल्ड्स के द्वारा किया गया कंजम्पशन, देन गवर्नमेंट के द्वारा किया गया कंजम्पशन, एंड देन नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के द्वारा या NGOs, टेम्पल्स, मॉस्क्स, गुरुद्वाराज एंड अदर इंस्टीट्यूशंस के द्वारा किया गया कंजम्पशन. नाउ इफ वी फॉर्मुलेट दिस, then we learn that aggregate consumption expenditure is equal to the sum of consumption expenditure by households, consumption expenditure by the government, and consumption expenditure by non-profit private institutions like NGOs, temples, mosques, gurdwaras, etc. So अगर हम इसको फॉर्मुलेट करते हैं एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को, तो हम ये देखते हैं कि इट इज़ द एग्रीगेट ऑफ और द सम ऑफ हाउसहोल्ड्स के द्वारा किया गया कंजम्पशन प्लस गवर्नमेंट के द्वारा किया गया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के द्वारा किया गया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. What do we include in non-profit private institutions is the NGOs, the temples, the mosques, the gurdwaras, etc. Now, continuing with the same, if you notice this slide, you'll see that government spends on various sectors. Say for example, government industries and economic services पर खर्च करती है, एग्रीकल्चर पर खर्च करती है, हाउसहोल्ड या हाउसिंग्स पर खर्च करती है, ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च करती है, हेल्थ पर खर्च करती है, रिक्रिएशन,
interest, public order and safety, interest, एजुकेशन टेक्नोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये वो डिफरेंट सेक्टर्स हैं जिन पर फर्दर गवर्नमेंट एक्सपेंड या स्पेंड करती है. सो दिस कॉन्स्टिट्यूट्स द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर which is another component of aggregate consumption expenditure. Now further, our second component for today is concept and components of investment expenditure. So it says investment refers to the addition to the stock of capital. कैपिटल की स्टॉक में जो एडिशन होता है उसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं. इफ़ यू फॉर्मुलेट इट इज़ फॉर्मुलाइज्ड एज आई इज इक्वल टू डेल्टा के, वेयर आई इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, के इज इक्वल टू कैपिटल स्टॉक एंड डेल्टा के इज इक्वल टू change in the capital stock during the year. So investment expenditure is nothing but addition to the stock of capital during and or in a particular year. Now इसे हम और बेहतर इसकी components या इसकी types के साथ समझने की कोशिश करते हैं. So here we go. Components of investment is fixed investment. It refers to the increase in the stock of fixed assets like plant and machinery of producers during an accounting year. Investments basically दो तरह का होता है, आगे भी हम देखेंगे that it is fixed investment and inventory investment. So fixed investment क्या होता है? Let us see once again. It refers to the increase in the stock of fixed assets like plant and machinery of the producers during an accounting year. Fixed assets are plant and machinery, building, etc. So, for example, if at the beginning of an accounting year a producer has a stock of 10 machines and at the end of the year he has a stock of 11 machines, then his fixed stock or fixed investment increases by one machine in that accounting year. तो अगर आप देखते हैं या इसको समझने की कोशिश करते हैं तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट मतलब एक प्रोड्यूसर साल के शुरुआत से लेकर साल के अंत तक अपनी फिक्स्ड एसेट्स की इन्वेस्टमेंट को जितना इंक्रीज कर पाता है, दैट इंक्रीज इज कॉल्ड इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर. नेक्स्ट वी हैव द सिग्निफिकेंस ऑफ fixed investment, but before that let us see how the fixed investment is formulated. So fixed investment is nothing but stock of fixed assets with the producer at the end of the accounting year minus stock of fixed assets with the producer at the beginning of the accounting year, which gives us the increase in the stock of fixed assets at the end of the accounting year. This is what is the formula for fixed investment. Now we move further with the significance of fixed investment. Significance, as you all know, significance का मतलब होता है importance. So here we learn or we see why the fixed investment is important. The first reason is raising the production capacity of the producers. मशीन्स के होने से, फिक्स्ड एसेट्स के होने से, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स के होने से प्रोडक्शन कैपेसिटी में वृद्धि होती है. सो दैट इज़ वाई द फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी. नेक्स्ट वी हैव लीडिंग टू हायर आउटपुट. सो प्रोडक्शन कैपेसिटी अगर बढ़ेगी प्रोड्यूसर्स की तो इट विल अल्टीमेटली ऐड टू फिजिकल यूनिट्स ऑफ आउटपुट. अर्लियर अगर आप 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर पाते थे तो अब आप 2000, 2500, 3000 यूनिट्स आप प्रोड्यूस कर पाएंगे if there is an increase in your fixed assets or investment of fixed assets in the enterprise. And ultimately this leads to higher rate of economic growth, particularly known as GDP growth. अगर economic growth, अगर fixed investments होंगे, प्रोडक्शन कैपेसिटी में बढ़ोतरी होगी, हायर आउटपुट जनरेट होगा तो अल्टीमेटली आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, विच अल्टीमेटली मीन्स द GDP ऑफ योर इकोनॉमी विल ग्रो. आवर नेक्स्ट कंपोनेंट इज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट.
So let us see what is inventory investment. At a point of time, producers hold the stock of finished goods, unsold goods, semi-finished goods, that is goods which are in the process of production, and raw material. This is called inventory stock. So what is inventory stock? Producers, when they produce goods, then they hold the stock of the following three things. या तो वो finished goods यानी unsold goods का stock इकट्ठा करते हैं, या फिर सेमी फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक इकट्ठा करते हैं, और या फिर रॉ मटेरियल का स्टॉक इकट्ठा करते हैं. दैट इज ऑल टुगेदर नोन एज इन्वेंट्री स्टॉक. एंड चेंज इन इन्वेंट्री स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर इज कॉल्ड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ऑफ द producers. What is inventory investment? Change in the stock of inventory during the year. And how is it formulated? Inventory stock at the end of the accounting year minus inventory stock at the beginning of the accounting year is equal to change in the inventory stock during an accounting year. Let us further see what is the significance of inventory investment. Like we saw the significance of fixed investment, we saw that fixed investment is required for three reasons: because of raising the production capacity as a result of higher output, and with higher output comes economic growth, which ultimately leads to growth in the GDP. Now further we will see the significance of inventory investment. So it reads as: inventory investment primarily consists of investment in terms of stock of raw material and finished goods. Inventory investment की जहाँ तक बात है तो primarily it composes of it, or it consists of stock of two things. That is, either it is a stock of raw material or it is the stock of finished goods. So the stock of raw material is significant to ensure uninterrupted supply of inputs to the producer. Raw materials का स्टॉक इसलिए रखा जाता है ताकि प्रोड्यूसर्स को इनपुट्स ज़रूरत पड़ने पर जब चाहें तब हम सप्लाई कर सकें या करवा सकें. To avoid day-to-day purchases of raw material from the market in and during times of uncertainties. When there is uncertainty in the market, say जब recession होगा या जब depression होगा market में, then we will not go for fresh purchases of raw material at that very point of time. So what we do in order to tackle such circumstances or tackle such situations is we purchase the raw material on an advanced basis so that we can cope up during the times of uncertainties in the market. Further, the stock of finished goods is significant because it enables the producer to meet the potential or future demand for the product. रॉ मटेरियल्स की जहाँ तक बात है तो रॉ मटेरियल्स का स्टॉक इसलिए रखा जाता है because we have to ensure uninterrupted supply of inputs to the producer, and also we cannot go for fresh purchases of raw material during and in times of uncertainties. Now as far as finished goods are concerned, finished goods का हम significance इसीलिए है, या stock of finished goods का significance इसलिए है because it enables the producer to meet the future or the potential demand for the product. सो फिनिश्ड गुड्स अगर हम रखेंगे हमारे स्टॉक में तो हम फ्यूचर की जो भी डिमांड है उसको आसानी से या अच्छी तरह से मीट कर पाएंगे. इट मे हाउएवर बी नोटेड दैट एक्चुअल इन्वेंट्री एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मे नॉट बी द डिज़ायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक. अ पार्ट ऑफ इट मे बी undesired. For example, a producer may have expected to sell 10,000 units of umbrellas, but he could sell only 5,000 owing to the lack of demand. So what is this difference?
stock of finished goods is kept to cater to the potential or the future demand for the product amongst the customers. And ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमारी एक्चुअल इन्वेंट्री स्टॉक जो है वो हमारी डिज़ायर्ड इन्वेंट्री के हमेशा बराबर हो, क्योंकि एक प्रोड्यूसर या एक सेलर ऐसा प्लान करता है, एज इफ़ यू गो बाय दिस एग्जांपल, कि मैं 10,000 यूनिट्स अम्ब्रेला की या छातों की बेचूंगा एक अकाउंटिंग या फाइनेंशियल ईयर में, बट मार्केट में डिमांड न होने के कारण वो 5,000 छाते ही अगर बेच पाता है, तो ये जो 5,000 अम्ब्रेलाज का लॉस है या अनडिज़ायर्ड इन्वेंट्री जो उसके पास या अनसोल्ड स्टॉक उसके पास बच जाता है, दैट इज़ द अनडिज़ायर्ड inventory stock, which ultimately leads to losses to the seller. Thus, we summarize that desired inventory stock is nothing but planned inventory stock, and it is maintained by the producer to meet the future demand. Producer ये सोचता है कि मैं मार्केट में एक्स यूनिट्स की डिमांड रहेगी और इसलिए वो उतनी यूनिट्स या उससे ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करके चलता है, सो दैट इन केस ऑफ मोर डिमांड ही हैज़ सरप्लस स्टॉक विद हिम and he does not have to go for producing the goods again and again. And undesired inventory stock is nothing but stock arising as a result of demand for a product being lower than expected. मार्केट में जितना प्रोड्यूसर सोचता है उतनी डिमांड न होने के कारण जो डिफरेंस होता है, that is known as nothing but undesired inventory stock. So these are the two topics for the day. Topic 2nd and 3rd of the chapter 2, that is concept and components of consumption expenditure and concept and components of investment expenditure. Just go through these topics and please clear your doubts. Both the topics are entirely theoretical in nature and have to be just learned. Thank you.